Okay, so I need to repeat it, right? Okay, so activity coefficient, we have seen equation, gives you an equation which relates the activity coefficient of one component with activity coefficient of second component in a binary system, which is given by equation 1, which can be transformed to equation 2 for a binary system because dx1 is equal to minus dx2. And now you can use equation 2 to estimate activity coefficient of one component, any one component, if we know the activity coefficient second component in a binary system. So if you know gamma 1, we can find gamma 2. If you know gamma 2, we can find gamma 1 from equation 2. So we can write equation 2 in the form of equation 3, which says dln gamma 1 is equal to minus x2 by x1 dln gamma 1 is equal to minus x2 by x1 dln gamma 2. And now we integrate between x2 equal to 0. At x2 equal to 0, x1 is equal to 1, and gamma 1 is equal to 1 because it's pure component 1, and the desired value of x2. So we'll get integral dln gamma 1 from 0 to ln gamma 1, and on the right hand side we'll get minus x2 by x1 integral dln gamma 2, and the limits are ln gamma 2 at x2 equal to 0, that's the lower limit, and upper limit is ln gamma 2 at x2. So if we integrate, we'll get equation 4, which is saying that ln gamma 1 is equal to minus integral x2 by x1 dln gamma 2, and the lower limit is again ln gamma 2 at x2 equal to 0, and upper limit is ln gamma 2. So we can do this integration analytically if we know an equation for ln gamma 2. If not, we can do it graphically, and graphically we can plot ln gamma 2 axis and x2 by x1 on the x-axis. We'll get some curve. I don't know what kind of curve we'll get depending on data. Whatever is the data, whatever is the curve, what you need to do is you need to find area under the curve between 0 to x2. Right? Whatever is the value of x2. So x2 by x1 जो भी रहेगा यहाँ पर, and that area will be essentially equal to minus ln gamma 1 because I have a negative sign here. Right? So if you know gamma 2 and we know the composition of the liquid x1 and x2, we can find ln gamma 1 or gamma 1. So that is how we can use Gibbs-Duhem equation to correlate activity coefficient of one component with the second component. Okay, any questions on how we are using Gibbs-Duhem equation to find activity coefficients? Okay, if there are no questions, then let's proceed to what we were doing yesterday, consistency test. सर Yeah. सर वो ln gamma 2 वाला इक्वेशन नहीं यूज कर सकते क्या हम? कौन सा इक्वेशन? ये वाला वैनलर वाला. Vanlar is essentially a constant. Constant A और B नहीं पता है तो कैसे निकालोगे? Right? You need to find some value of measure value of gamma 1 and gamma 2 experimentally. Then you can find out value of A and B. Whatever A रहेगा या B रहेगा, right? वो कैसे निकालेंगे unless we have gamma 1, gamma 2. Now this is saying कि अगर मेरे पास gamma 1 है तो I can find gamma 2. Then I can go to another equation, find out constants A and B, and then I can use that equation. Ultimately, data तो चाहिए ना हमारे को A और B निकालने के लिए. जितने प्रॉब्लम किए हमने, we are always specified some data. Some data was given to us to find out the constants A and B of another equation. How do we get the data? Experiments. Experiment data जो आएगा वो correct है कि नहीं, कैसे test करेंगे? That's what we are checking. Yes, sir. Okay. Okay, so let's go back to the consistency test. कल जो किया था पूरा, I'll just briefly go over it because there were some questions on it. I'll not spend too much time. अगर doubt है तो पूछ सकते हो आप, but I'll clarify certain points, right? So first method was Gibbs-Duhem equation. We have seen that, right? ये आपने देखा था equation 1, equation 2,
राइट। इसमें कोई क्वेश्चन है इक्वेशन 2 में? सिंपल है, इक्वेशन अभी भी हमने किया, जस्ट सब्स्टिट्यूटिंग फॉर बाइनरी सिस्टम x2 इक्वल टू -1 माइनस x1 and dx1 equal to minus dx2. Now if we plot ln gamma versus x1 and measure slopes of tangents at different values, we have seen that both slopes should have opposite signs, right? ये हमने देखा था ग्राफ में, ln gamma versus x1 प्लॉट किया, and at any point at same value of x1, if we take tangent of ln gamma 1 and ln gamma 2, we see that slope of, अगर एक का स्लोप पॉजिटिव है तो दूसरे का नेगेटिव हो जाएगा, राइट। सो अगर ऊपर जाएंगे इधर साइड में तो इट विल बी अपोजिट साइड, सो वॉट एवर इट इज प्लस माइनस हो जाएगा तो अपोजिट साइड हो जाएगा, दैट्स व्हाट फर्स्ट कंडीशन इज, राइट। बोथ स्लोप्स शुड हैव अपोजिट साइंस, ठीक है। नाउ द स्लोप्स हैव अपोजिट साइंस, देन सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 2, then you can substitute the values in equation 2, and if equation 2 is satisfied then data are consistent. So this equation has to be satisfied, gives you an equation at all conditions has to be satisfied, there is no other go, right। फर्स्ट टेस्ट सिर्फ हम टेस्ट कर रहे हैं कि स्लोप अपोजिट है कि नहीं, but that doesn't mean that data is correct. Still we need to see whether the data satisfies this equation. This opposite is only satisfying this condition कि नेगेटिव होना चाहिए, right? ठीक है। So then we repeat step 2 for all values of x. सब वैल्यू जितने हम डेटा मेजर किया सबके लिए गिव्स टू हम इक्वेशन सेटिस्फाई होना चाहिए, देन ओनली द डेटा इज कंसिस्टेंट, ठीक है। दिस इज द रियल टेस्ट, ये बाकी सब ऑब्जर्वेशंस है, लुकिंग एट डेटा एट हाई लेवल। इनिशियली हम डेटा कलेक्ट करते हैं, यू कैन इमीडिएटली सी दैट मेक सेंस और नॉट, ग्रॉस मिस्टेक्स तो नहीं है, ये पॉजिटिव अपोजिट साइंस इज ओनली सेइंग ग्रॉस मिस्टेक्स तो है नहीं, अगर दोनों पॉजिटिव आया दैट मीन्स हमारा डेटा गलत है। We don't need to go and check for satisfaction of equation 2, right? एक एक वैल्यू करने की जरूरत नहीं है, that's what it says, okay? So other observations are, if ln gamma curves has a maximum or minimum, then the other curve must have minimum or maximum. Again observation, this is not a test. Test is only this कि ये gives 2m equation satisfy होना चाहिए, that is the only test, okay? These are just observations. So if you look at this curve, एक मैक्सिमम था तो सेम वैल्यू पर मिनिमम था, राइट। अब किसी ने कभी पूछा था व्हाई शुड इट बी लाइक दिस, राइट, मैक्सिमम है तो मिनिमम क्यों आना चाहिए। सो इफ यू लुक एट दिस कर्व एट दिस वैल्यू, सपोज आई प्लॉट टेक द ड्रॉ द टेंजेंट एट डिफरेंट वैल्यूज, यहाँ पर टेंजेंट ड्रॉ किया, इसका स्लोप आएगा पॉजिटिव, बराबर इस साइड में, तो अपोजिट साइड में जो है दूसरा कर्व का शुड बी नेगेटिव, राइट। और नेगेटिव कब होगा? ओनली व्हेन देयर इज अ मिनिमम हियर, क्योंकि यहाँ पर जो हम ड्रॉ कर रहे हैं टेंजेंट, ये टेंजेंट जो हमने ड्रॉ किया है इट मीन नेगेटिव ओनली बिकॉज देयर इज मिनिमम। अगर मैक्सिमम रहता है यहीं पर तो अगेन स्लोप पॉजिटिव रहता था इस साइड में। इफ आई टेक एनी वैल्यू हियर, सर वहाँ पे स्लोप पॉजिटिव होगा ना मिनिमम के बाद में, क्योंकि इंक्रीज हो रहा है। और ओके ऊपर को नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, राइट, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, ठीक है। उल्टा उल्टा लिखा मैंने और कुछ नहीं है, ठीक है। So if I take any value of x1 on this side, तो इसका स्लोप यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव होना चाहिए, और वो कब होगा? व्हेन देयर इज अ मिनिमम हियर, अदरवाइज नॉट पॉसिबल। अगर दोनों साइड दोनों ऊपर रहेगा तो उससे स्लोप अपोजिट नहीं होगा। सिमिलरली इफ आई टेक अ टेंजेंट ऑन अदर साइड, इस साइड में, तो यहाँ पर अगर पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव होगा, ओनली व्हेन देयर इज अ मैक्सिमम इधर तो इधर मिनिमम होगा, ठीक है। समझ में आया? Yes, बाय मैक्सिमम एट वन पॉइंट, सेम पॉइंट पे मिनिमम रहना चाहिए दूसरे के लिए।
You don't need to see any derivation. Graphically, you can show that. And it's just an observation. It's not a test. Again, remember that test is only this one. This is the only test for consistency. And if there is no maximum or minimum, then both curves must be positive or negative over the entire range, right? हमने देखा था. If I look at this value, this curve, यहाँ पर 0 है या पॉजिटिव है, राइट, ऊपर है. दैट मीन्स ln gamma is greater than 0. तो दोनों पॉजिटिव है, राइट. If there is no maximum, यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम नहीं है, तो both curves must be positive or negative over the entire range. That means दोनों पॉजिटिव है यहाँ पर. Gamma ln gamma 1 ln gamma 2 both are positive, and this is consistent data. If I draw this one, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव, दिस इनकंसिस्टेंट डेटा. ठीक है, समझ में आ रहा है? If I take negative, तो क्या हो जाएगा? नेगेटिव लिया तो अगेन सेम थिंग हो जाएगा, कुछ नहीं है. What we'll do is, if I draw another curve, suppose it is like this, between suppose 0, this is 1, and the curves are like this. तो दोनों नेगेटिव रहना चाहिए, राइट. बोथ आर बिलो 0, then this is consistent. अगर एक ऊपर है एक नीचे, there is inconsistent. So it doesn't matter whether it is positive or negative. This one question was I think asked by Siddhi, right? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हो सकता है क्या? लॉन्ग बैक शी हैड आस्क्ड. नहीं हो सकता, बिकॉज एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दैट मीन्स इट इज इनकंसिस्टेंट डेटा. Either both should be positive or both should be negative, and that's what this says. If gamma 1 is greater than 1, gamma 2 should be greater than 1. If gamma 1 is less than 1, gamma 2 should be less than 1. In other words, ln gamma 1, if it is greater than 0, then ln gamma 2 should be greater than 0. And ln gamma 1, if it is less than 0, then ln gamma 2 should be less than 0. These are all observations, they are not tests. Test is only Gibbs-Duhem equation, because we are calling this as, basically using slopes, but actually ये test करना ही पड़ेगा. Data has to be substituted in equation 2 to check whether this is not consistent or not. ठीक है? Yes sir. हम यहीं डालेंगे, equation 2 में slope डालेंगे और test करेंगे. Okay, is that clear? Yes sir, clear. Okay, so let's go to the second one. Second one में कोई डाउट था किसी को? यूजिंग डेटा एट मिड पॉइंट वाला हमने बहुत डीप एनालिसिस किया था. A equal to B, A equal to 2B, A equal to 3B वगैरह लेके किया था, and we had done this. I doubt if you have questions, then you can go through this. If not, then you can go to the next one. Sir. Yeah. सर वो हमने वैल्यू निकाली थी नहीं क्या? ln at x1 equal to x2 equal to 0.5, ln gamma 1 equal to b/4. तो वो b/4 उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, इसलिए ln gamma 1 की वैल्यू b/4 आई ना? Right. Gibbs-Duhem equation. No, this is Van Laar equation. Right? We are using Van Laar equation. We are not using Gibbs-Duhem. Yeah, Van Laar equation satisfies Gibbs-Duhem equation. That's the integrated form of Gibbs-Duhem equation. Right? So yeah, when you say Van Laar equation satisfies हुआ, it satisfies Gibbs-Duhem equation also by default. So basic is Gibbs-Duhem, but Van Laar equation is derived from there. ठीक है? Any questions on this midpoint का values जो देखा था हमने? Okay, if there are no questions, और ये graphically है, I think geometrically prove किया होगा किसी ने. I don't know the proof of that. We don't need to worry about that. Ultimately, what we need to see is that the curve is having
what you call ln gamma 1 at x equal to 0.5 बोला, suppose you say this, right? And ये करना है हमारे को, तो this curve has to be below that curve. Gamma 2 has to be below gamma 1 to satisfy this condition. अगर ये ऊपर रहेगा, gamma 2 is above gamma 1 curve, then this is inconsistent data. This must be some geometric proof. Let's not worry about the proof of that. This is the condition to be satisfied. सर अगर a ग्रेटर होगा तो Doesn't matter, उल्टा हो जाएगा कर्व, ये इधर आ जाएगा, दिस विल बी बी ऊपर आ जाएगा यहाँ पर, इट विल मिरर इमेज और कुछ नहीं. हाँ सर. यहाँ पर बी ऊपर आ रहा ना, यहाँ पर ए नीचे आ रहा, राइट? उल्टा हो जाएगा, इधर इधर ए हो जाएगा, ए ऊपर आ जाएगा, बी नीचे आ जाएगा, फर्क कुछ नहीं है. मतलब लास्ट वाली कंडीशन कंसिस्टेंट हो जाएगा. कंडीशन उल्टा आएगा. ln gamma 2 at x2 equal to 0.5 equal to 1/4 ln gamma 1 infinity at x1 tended to 0. यस सर. ठीक है, और क्वेश्चन है किसी को? Okay, so then we have seen Redlich-Krister method. इसमें डेरिवेशन में किसी क्वेश्चन था? Let's see that derivation, okay, because थोड़ा जल्दी में किया था ये. Okay, so Redlich-Krister method is actually also called as zero area method, and it can be used when we have activity coefficient data over the entire range. It means between 0 to 1, there are many data points available. And this is based on excess Gibbs free energy, which is nothing but free energy of mixing of real solution minus free energy of mixing of ideal solution. And we had derived equation 5 before. Delta G is equal to RT summation of xi and gamma I. And for binary system, we can write equation 6. And substituting x2 equal to 1 minus x1, we get equation 7. Right? And from Gibbs GM equation, we can get equation 9, essentially substituting x1 x2 equal to 1 minus x1 and dx1 equal to minus dx2. And if we substitute this equation, Gibbs GM equation in equation 7, these two terms cancel out, and what we get is equation 10. It's nothing but d delta G by dx1 is equal to RT ln gamma 1 upon gamma 2. Okay, so now we integrate equation 10 between x1 equal to 0 to x1 equal to 1. When x1 equal to 0, it's pure component 2, and when x1 equal to 1, it's pure component 1, right? So at these boundary conditions, for pure components, there's no mixing effect, right? So delta G is equal to 0 at the two ends, boundary conditions. So when we integrate d delta G, the lower limit is also 0, upper limit also 0, because delta G is 0 at both the ends. And the right hand side is integral RT ln gamma 1 upon gamma 2 dx1 between 0 to 1, x1 is between 0 to 1. So what we get is integral 0 to 1 ln gamma 1 upon gamma 2 dx1 equal to 0. So this integral should be 0, right? And so if we plot ln gamma 1 upon gamma 2 versus x1, you'll get a curve like this. And this is when it is consistent data. Let me put it here. But if you have inconsistent data, what we may get is something different. सर वो 0.1 कैलकुलेशन से आया है या सिर्फ एक्सपेरिमेंटल डेटा है? 0.1
मतलब 0.1.2. ये सब एक्सपेरिमेंटल डेटा है। ओके ओके सर. We are looking at experimental data and checking whether the data makes sense or not, whether it is meaningful or not, whether it is consistent or not, whether it is correct or not. ठीक है? If I take some other data, and plot it, I may get something different. Suppose I get something like this. Doesn't matter, it's just experimental data, right? Or I can get something like this. ये तो almost correct आ गया. I want to show unequal areas. Right? Suppose I get something like this, right? So in this case, you can see that this area is not same as this area, right? Because this 0 is 1, right? So this is positive, this is negative, right? So if this area is not equal to this area, that means area under the curve जो है यहाँ पर, this area is not going to be equal to 0. Integration, graphical integration is always you plot whatever is the integral under integral sign as ln gamma 2 gamma 1 upon gamma 2 dx1, right? So you plot ln gamma 1 upon gamma 2 versus x1 and integrate between the limits 0 to 1. यहाँ पर मैंने देखा है it's almost equal area, so this is positive area, this is negative area, this is below, this is above 0, this is below 0. That's why this is positive, this is negative. दोनों equal हैगा तो positive plus negative. Suppose this is say 10, whatever, 10 squares, and this is again 10. But this is more positive, this is negative. So the overall area will be equal to 0. Here suppose it is 8 and this is 10. So this is plus 8, this is minus 10. So the area is not going to be equal to 0. So then this is inconsistent data. समझ में आया ये? Yes. Okay. So there are no questions. Let's move to the fourth one. This is another test which is called using coexistence equation. And this is for binary systems if vapor behaves as ideal gas and liquid is not equal to ideal solution. Right? So if we look at Raoult's law, equation 12 is right. Y P is equal to gamma I xi PIS. From here you can get for binary system gamma 1 is equal to y1 p upon x1 p1s and gamma 2 equal to y2 p upon x2 p2s. We have used this many times. If you take the Gibbs-Duhem equation, so you'll see ultimately everything starts from Gibbs-Duhem equation, right? And we derive something. So we take this Gibbs-Duhem equation, substitute for x2 equal to 1 minus x1 and dx2 equal to minus dx1, and we get equation 14. Right? x1 dln gamma 1 is equal to minus 1 minus x1 dln gamma 2. Okay? So substitute 13 in 14, this equation in this equation, and what we get is x1 d gamma 1 we are putting as y1 p upon x1 p1s 1 minus x1 dln again gamma 2 is equal to y2 p upon x2 p2s. Okay? And we know that vapor pressure is constant. So P1s is equal to constant, P2s is equal to constant at constant temperature. We are assuming constant temperature here. So we can take P1s as constant and this सब proof है इस सब का इसका. So x1 dln y1 p upon x1 p1s is equal to minus इसको open किया dln y2 p upon x2 p2s plus x1
dln y2p and x2 p2s, and this will be nothing but x1 dln y1p minus, denominator will become minus x1 into dln x1 p1s is equal to minus dln y2p माइनस माइनस प्लस हो जाएगा dln x2 p2s प्लस x1 dln y2p minus x1 dln x2 p2s, right? And we know that p1s is constant and p2s is constant, so dln p2s is 0 and similarly dln p1s is also 0. ठीक है? So what we get is x1 dln y1p plus इधर लाया हमने x dln y2p minus x1 dln y2p is equal to 0. All the terms on the left hand side, and again you open this x1 dln y1 plus x1 dln p plus x dln y2 plus dln p minus x1 dln y2 minus x1 dln p. ये दो टर्म कैंसिल हो जाएंगे and what we get is this equation. So we write dln y1 is nothing but dy by y. So we write that same in that form, x1 dy1 upon y1 plus y dy2 upon y2 minus x1 dy2 upon y2 plus dp by p. ये simplify करने के बाद you get equation 15. You can see this equation. I'm not going to read it out. अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछो. ठीक है, any questions on equation 15? Anybody has any questions on equation 15? Okay, no questions. So this is called consistency equation. Again, we are testing data, right? अगर हमने data collect किया VLE का and we measure y1, x1 and pressure, then that should satisfy this equation 15, right? Or you can use it to calculate x, y or p for the two variables available. Suppose x1, y1 is available, you can calculate p. If x1, p is available, you can calculate y1, right? And if all three are available, then you can use it to just check for consistency of data. Does it make sense? Does it represent the system correctly? If it doesn't satisfy this equation, then the data is not consistent. Okay. Any questions on consistency test? Okay, so the last method for checking consistency is using partial pressure data. Again, you'll see everywhere Gibbs equation is always involved. Without that, we cannot test it. कुछ भी करो, ultimately starting point कुछ Gibbs equation ही रहता है. So we are starting with this form of Gibbs equation now. x1 dln f1 bar upon dx1 is equal to x2 dln f2 bar by dou x2. So at low pressure, viscosity is equal to pressure that we have seen, right? So equation 16 becomes x1 dln p1 bar by dx1. Again, x2 equal to minus dx1 डाला यहाँ पर is equal to minus x2 dln p2 bar upon dx1. Where p1 bar and p2 bar are partial pressures.
ठीक है. So you can write this as x1 divided by p1 bar dp1 bar by dx1 minus x2 bar p2 bar dp2 bar by dx1. So again, this has to be satisfied for consistency of data. So what you do is plot partial pressure of both components versus x1. Determine slopes, जो है इसका slopes निकालने का dp1 bar by dx1 and dp2 bar by dx1. Calculate left hand side, right hand side, and both absolute values of both these terms must be same, right? Because there is a minus sign here. Right? So absolute value of both the terms should be same or equal for consistency. Essentially, we are saying that equation 17 should be satisfied. And this is done just example bataya. We plot for pressure versus x1, and we have partial pressure curve P1x1 versus P1x1 curve and P2 bar x1 curve. Slope निकालने का different values पर, and then use it to test for equation 17. Any questions on consistency test? We have seen 5 tests. और एग्जाम में आता है, ये बहुत बार आता है कि derive the consistency test, Redlich Krister method बोलो, consistency equation बोलो, जो भी है. There are 5 methods, right? Partial pressure data, midpoint data, coexistence equation. You have to show all these things. Redlich Krister method. कौन सीटी बजा रहा है? म्यूट करके बजाने का, बजाना है तो. Midpoint data and slopes of L and gamma curves. So there are 5 methods and anything can come in the exam. Normally it is short note on so and so. Any doubts, questions on consistency tests? No, good, अच्छी बात है. So then we'll move to the next topic. Okay, so we have covered so far. हमने पहले इक्विलिब्रियम स्टेबिलिटी पहले कवर किया था, यूनिट 3 में कवर किया था. We have done consistency test. Now what remains is liquid equilibrium, solid liquid equilibrium and osmotic pressure. 3 टॉपिक बाकी है. यूनिट छोटा है, पूरा theory है. No problems, no numericals in this unit. Okay, so when we talk about liquid equilibrium, example पता है, याद है किसी को? लिक्विड इक्विलिब्रियम का केमिकल इंजीनियरिंग में कहाँ यूज होता है? नहीं याद है किसी को? पीसी में पढ़ा है मैंने आपको ये. किसी को याद नहीं है? देवेंद्र, सो रहा है क्या देवेंद्र? देवेंद्र स्लीपिंग. दीक्षिता, नो सर. फिर जवाब क्यों नहीं दिया है? सर यहाँ पे आवाज आवाज नहीं आ रहा?
आवाज का सबको प्रॉब्लम है कि सिर्फ देवेंद्र को प्रॉब्लम है? सर मेरे घर में आवाज बहुत है। आवाज बहुत है। पार्टी चल रही है क्या? क्या क्या देवेंद्र, पार्टी वार्टी चल रही है क्या? पार्टी तो रात को होती है ना, कि खत्म नहीं हुई पार्टी कल रात की? नहीं सर। हाँ, अभी तक चल रही है पार्टी कल रात की। ओके, दीक्षिता याद है? सर एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन, एग्जैक्टली। लिक्विड एक्सट्रैक्शन किया था हमने, सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन भी किया था, विच इज कॉल्ड व्हाट इज अदर नेम फॉर सॉलिड लिक्विड एक्सट्रैक्शन? लीचिंग। लीचिंग, राइट, वो किया था। और लिक्विड लिक्विड एक्सट्रैक्शन भी किया था, where we get two phases, one organic phase, one aqueous phase, right? सब किया हुआ रहता है, आप भूल जाते हो सब लोग। डिटेल्स याद नहीं रहा तो नहीं रहा, एटलीस्ट नाम याद रहना चाहिए। ओके, सो लेट्स वी हैव सीन क्राइटेरिया ऑफ स्टेबिलिटी, राइट? स्टार्टिंग में ये देखा था हमने, व्हेन वी स्टार्टेड वीएलई। इक्विलिब्रियम क्राइटेरिया देखा था, बाद में स्टेबिलिटी क्राइटेरिया देखा था, एंड दिस व्हाट वी हैड सीन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर d square delta g by dx1 square should be greater than 0, right? And we had explained this curve also, delta g versus x1, right? Who can explain stability कहाँ रहेगा कहाँ नहीं रहेगा इसमें, ये कर्व में? Where is it stable, where is it unstable? याद है किसी को? इस साल किया हमने यूनिट 3 में। Who can explain? एटलीस्ट बताओ किस रीजन में स्टेबल है, किस रीजन में अनस्टेबल है। सर वो जो ऊपर का कर्व है वहाँ पे स्टेबल रहेगा, मतलब ए टू बी जो है, और नीचे जो एम एन है ना वो, क्योंकि उसका गिव्स एनर्जी कम है ना एम एन के, इसलिए वो अनस्टेबल होगा। गुड, मतलब वेरी गुड। सो नहीं रहा है, जाग रहा है। ओके, अच्छी बात है। सो दिस इज व्हाट यू हैड शोन बिफोर, राइट? पूरा बताया था मैंने आपको। दिस कंडीशन ऑफ second derivative being greater than 0, it proves that in this region we have unstable system. तो उसमें क्या हो जाता है, it separates into two layers. बाकी सब ऊपर का जो है, यानी even other position, suppose I take this position, anywhere here it is stable, only in this portion it is unstable, right? Why? Because if you take the derivatives, second derivatives का, तो इसमें जो रहता है, जो अनस्टेबल जो है, अनस्टेबल जो रहेगा, यहाँ डॉटेड लाइन रहेगा, दैट इज लोअर देन दैट, सो डेल्टा जी हैज टू मिनिमम, राइट? फॉर स्टेबिलिटी, यू हैव सीन दैट. दैट इज नॉट सेटिस्फाइड, एंड दैट इज व्हाई दिस पोर्शन विल लीड टू टू लेयर्स. अगर कंपोजिशन इस रीजन में रहेगा, इन दिस रीजन विल गेट टू लेयर्स, बाकी रीजन में नहीं होगा, ओनली इन दिस रीजन विल गेट separation of the liquid phase into two layers. Okay, same thing is shown here also. Same curve और कुछ नहीं है. So curve 1 is completely miscible, curve 2 separates into two phases, alpha and beta. यहाँ पर जो है ना, ये अल्फा फेज हो जाएगा, ये बीटा फेज हो जाएगा, ये कंपोजिशन जाएगा. एनीथिंग विल सेपरेट इनटू दिस एंड दिस. अगर ये कंपोजिशन लिया हमने, तो we'll get two layers. One composition will be this, one composition will be this. Okay, याद है किसी को? याद आ रहा है? सर एक डाउट था कि वो जो एम एन है ना, लाइन एम एन, हाँ वो मतलब मिक्स्ड फेज का कैसे रिप्रेजेंट करती है, वो नहीं समझे। नहीं, मिक्स फेज का नहीं है. Essentially what happens in a week, or first condition was delta should be minimum, right? याद है? यस, हाँ Right, इक्विलिब्रियम के लिए डेल्टा जी शुड बी मिनिमम, राइट? डेल्टा जी लेस देन इक्वल टू 0, राइट?
लेस देन 0 बोला था हमने, तो वो कब होगा? व्हेन जो सॉल्यूशन है उसका डेल्टा जी इज लेस देन द अनस्टेबल सिस्टम, राइट? अगर ये अनस्टेबल है, सपोज ये अनस्टेबल है, राइट, और ये स्टेबल है, यहाँ पर एक ही यहाँ पर एक ही कर्व है, बट यहाँ पर जो है व्हेन इसे आई हैव कंपोजिशन हियर, उसका डेल्टा जी है कंपोज सॉल्यूशन का, राइट, ऊपर वाले कर्व में दिस इज डेल्टा जी ऑफ solution, but if it separates into two, it will lie somewhere here. तो उसमें क्या हो जाएगा? ये जो है, ये जो है, that is what it is reducing. So delta G after mixing will be less than ठीक है। So delta G of two layers जो यहाँ पर है is less than delta G of mixture which is here, and that is why that condition of delta G less than 0 will be satisfied. मतलब वो सिर्फ अनमिक्स्ड फेज में है ना, डेल्टा मतलब जो सॉलिड कर्व है उसमें। Solid curve is after when you mix it. जैसे हमने लिया, suppose I take water at toluene, राइट? मैंने टोल्यून लिया, वाटर लिया, और सपोज उसका कर्व ऐसा आता है कि इस कंपोजिशन पर व्हेन आई मिक्स इट टू, आई कैन टेक से 100 ml ऑफ टोल्यून एंड से 50 ml वाटर, डजंट मैटर, जो भी कंपोजिशन रहेगा उसको मिक्स किया मैंने, मिक्स किया तो उसका ये डेल्टा जी रहेगा उस सोल्यूशन का। बट व्हाट विल हैपन इज बिकॉज दिस इज अनस्टेबल, इट विल सेपरेट इनटू टू कंपोजिशंस, टू लेयर्स, वन इज यहाँ पर एक्सट्रीम आ रहा है, यहाँ पर कम आ रहा है, बट एक्सट्रीम आ जाएगा टोल्यून वाटर में, क्या हो जाएगा? इट कम टू वट एवर दिस एंड दिस, पूरे लेयर में, पूरे कंपोजिशन लेयर में मिक्सिंग नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है? बिटवीन दिस एंड दिस इट इज मिक्सेबल, राइट? यहाँ पर मिक्सेबल है ये सिस्टम, सिर्फ यहाँ पर इमिक्सेबल है, राइट? सो इफ आई टेक कंपोजिशन बिटवीन दीज टू, मे बी टोल्यून वाटर इज नॉट अ गुड एग्जाम्पल, बट जो भी अगर सिस्टम लिया जिसका ये कंपोजिशन है और वो मिक्सिंग के बाद सेपरेट हो जाता है इंटू टू लेयर्स, तो मिक्सिंग के बाद जो डेल्टा जी रहेगा इट इज लेस देन द मिक्स्ड सॉल्यूशन, दैट इज व्हाई इट इज सेपरेटिंग आउट। मतलब वो जो ए बी है वो जो लाइन ए बी है वो और एम एन है वो इंटरपोलेटेड है क्या? इंटरपोलेटेड नहीं है, सी इट जस्ट सेज कि ये जो है, ये कंडीशन जो है, ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी ओनली इफ द कर्व इज डॉटेड कर्व। बताया था मैंने आपको क्यों, बिकॉज इफ आई टेक द टेंजेंट हियर एंड हियर, इट्स नॉट गोइंग टू सेटिस्फाई दिस कर्व, इक्वेशन 1। दैट इज व्हाई द स्मूथ कर्व हैज टू बी स्मूथ, स्मूथ कर्व के लिए डॉटेड लाइन ड्रॉ किया है। दिस इज स्टेबल कर्व और दिस इज सेटिस्फाई दिस कंडीशन, एंड दिस जो ऊपर वाला कर्व है, जो हम बैक कर रहा है कैमल के समान, वो अनस्टेबल रहेगा बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू सेटिस्फाई दिस कंडीशन, and that is why this upper curve is stable and lower curve is unstable in this region. उस रीजन में ही अनस्टेबल है बिकॉज वहाँ पर वो जो है ऊपर वो से घूम के जा रहा है, तो ये कंडीशन कभी सेटिस्फाई नहीं होगा। एंड डिफरेंट सॉल्यूशंस विल हैव डिफरेंट कर्व्स। ये जो है, ये ऐसा जो है, ये दिखा रहा है, इट चेंज डिपेंडिंग ऑन द कंपोनेंट्स, क्या मिक्स कर रहे हैं हम। समझ में आया? यस सर, गॉट। This is just an example. This curve is going to be different for every solution. If I take toluene water, it's going to be different from this one. It's not going to be like this. It may be something else. I don't know what it's going to be, but it's going to be different. If I take some other system, it's going to have different curves. This is just an example कि क्या होता है, कहाँ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है और कहाँ वो सेपरेट होके दो लेयर बन जाता है। ठीक है, ओके, ठीक है। तो ऑलमोस्ट टाइम हो गया, सो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर टुमारो एंड और मंडे।
next Wednesday को we look at liquid equilibrium.